if you are someone who always do good to others, who always do nice things to other, and you think like you are getting misused and you are being nice to the people and you are not getting the same in return, एंड आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, आप लोगों को ओवर गिव कर रहे हो, आप हमेशा उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, यू आर ऑलवेज पॉजिटिव अराउंड द पीपल, but still you are not getting what you should get in the reply, because people are just mean to you and they are just using you. So how to set your boundaries, that you are being nice to the people, but they should make sure that you should make sure that they are the people who deserve your kindness, or there are the people who don't really deserve your kindness, and you should stop being nice to them. So if you are that person, then you have to stay with the video, and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि how you can set your boundaries with the people, so that कोई भी आपकी काइंडनेस का, आपके अच्छे होने का, आपके पॉजिटिव होने का फ़ायदा ना उठा सके. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ इकरा द स्टोरी टेलर, एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ सेइंग कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, which I partially believe that. I believe that to that extent that yes, for the long term, because there is a God. ठीक है, if there is a God and God exists, of course it exists. So we know that Allah cannot be on that part which is unfair. Like Allah is not unfair to anybody. So definitely there is a karma. So people who are doing bad to you, the people who are just using your kindness and mistreating you on that, so they would get their karma. Of course they will get, but that will be on the long term. So what is your responsibility towards yourself? How you can prioritize yourself? How you can stop being kind, stop being nice to the people who don't deserve that? Like literally आप 100% लोगों से, आप सब लोगों से काइंड नहीं हो सकते, आप सबके साथ अच्छा नहीं कर सकते. अच्छा होने पे, अच्छा करने पे, लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहने से, इफ़ दे आर ट्रीटिंग यू बैड, इफ़ दे आर बैक बिचिंग अबाउट यू, इफ़ यू नो दैट दे आर लाइंग टू यू, दे आर बिट्रेइंग यू, एंड स्टिल यू आर बीइंग नाइस टू देम, आपको कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला, आपको इस पर कोई भी किसी किस्म का अवार्ड नहीं मिलने वाला. देन वाई यू आर गिविंग योर सो मच एनर्जी? दैट इज बीइंग अनफेयर टू योर सेल्फ. लाइक आप उन लोगों के साथ भी अच्छा कर रहे हो जो आपके साथ नहीं कर रहे. इट्स मीन यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यू डोंट, योर सोल डोंट गेट इंसल्टेड, बिकॉज आप लोगों को जो दे रहे हो वो आपको रिटर्न में आ ही नहीं रहा, लेकिन स्टिल आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते. इट्स मीन you don't feel any responsibility towards your soul. You are not doing anything to make your soul happy. You are not for yourself, you are just for others. Like वो काइंडनेस की देवी देवता बन के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला. लिटरली नो बडी इज हेयर टू गिव यू एन अवार्ड दैट ये बेचारा तो सबके साथ अच्छा ही करता है, इसके साथ अच्छा ही होना चाहिए. देयर आर पीपल हु विल अप्रिशिएट यू ऑन दैट, but but there will be like 80% of the people will just used you for this trait that you are always being nice when there is no need to be nice. Like there are some mean people who just deserve that shit in reply. Whatever they are doing with you, just do it with them. Or if you can't be mean to them, if you can't be like uh, rude to them, so what you have to do, just make your boundaries and stay on that. If you are, if you're working for something, if you a person with a big dreams, if you have so much of ambition, then you have to set your life according to that. To be on that path, you have to set your boundaries. You can't let एवरीबडी क्रॉस योर बाउंड्रीज. ऐसे आप जिंदगी में कहीं भी नहीं जाने वाले हो अगर आप ओवर एंड ओवर लोगों को चांसेस दे रहे हो कि वो आए और आपकी बाउंड्रीज ब्रीच करके चले जाएं. या यू आर द पर्सन लाइक ओ मैं आई नो हाउ टू से नो, बट this is just for saying, like I was the type of a person who was like, I know how, even I am struggling how to say no now. Like really now when I am like on a many level I have achieved that yes, I have my boundaries and I have to stay on my boundaries, but still I struggle with saying no. I know that is difficult. Like if you're a kind person, if you are a positive person, but somehow I feel like that's people pleasing. You don't have to be people pleaser all the time.
लुक, द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, वो एनर्जी जो आप किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज कर सकते हो, जो आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशन पे स्टे करने के लिए, जो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए ऑन योर एम्बिशन, जो एनर्जी आप यूज कर सकते हो, वो सेम एनर्जी आप लोगों को काइंडनेस देने में लगा रहे हो। आप लोगों के जवाब में जो वो बिट्रेल है या जो भी रवैये हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, वो आप बर्दाश्त करने में वो एनर्जी लगा रहे हो, जो एनर्जी आपको प्रोडक्टिव कामों में लगानी चाहिए। तो दैट इज बीइंग अनफेयर टू योर सेल्फ। सो व्हाट यू हैव टू डू, set your boundaries, like just not for saying that I know how to say no, and you are just saying no to the person like which you really don't like where the person who you really don't like, or the situation you really don't like you can say no. That is not a big thing. But with the people, with the situation, you feel like they are good people, but you have just met them, like few minutes ago you met them, and आपने अपनी सारी जिंदगी उनके सामने खोल के रख दी है कि wow, I'm this, I'll do this for you, I'll do this for you, and you are then doing this again and again and again, and you are not getting same thing in reply. आपको समझ आ रही है कि look, in this relationship, in this situationship, in this circumstances, I am giving them more, but I'm not getting same thing in reply. I am not their priority. So if you are not making yourself priority, अपने आप को पीछे करके आप किसी को priority बना, how they can make you priority? They will not, they are not you. And दुनिया उसकी कदर कभी नहीं करती, उसकी कभी नहीं होती जो ओवर सेक्रीफाइस करता है, जो अपने आप को पीछे रख के किसी के लिए कुछ करते हैं. Like I don't think so. Like people will be, oh my God, you did this, so appreciative. But when it comes to action, they will always choose the people. Like this is human nature. We love to chase people who are, के बारे में हमें पता होता है कि नहीं, हमें इनको जानने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, इनके साथ उठने बैठने के लिए, इनकी लाइफ का पार्ट बनने के लिए इनकी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. द पर्सन हु इज ऑलरेडी देयर, हमें पता है कि हम उसकी प्रायोरिटी है ही है, कहीं ना कहीं हम उस चीज को टेक इट इजी वे में लेते हैं. सो ड्रॉ योर बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लाइक विथ योर फ्रेंड्स एंड समथिंग इज कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करनी, बट एवरीबडी इन दिस पार्टी, एवरीबडी इन दिस फंक्शन, एवरीबडी इन दैट ग्रुप इज डूइंग दैट थिंग. It can be anything. It can be, for example, dance. So this is your boundary, that you don't like to dance on every event. Like there can be an event you can, but you don't like to, like whenever the friend gathering is there, and not, it is not mandatory all the time that you will dance, and everybody, oh, you are so boring. You will tell them like politely that, look, I am not very fond of dancing, and I'll not feeling like to dance today, and this is my boundary, and I don't think so I should do that. If they understand, that's really good. But अगर आप उस पे आपके फ्रेंड्स आपको फिर बार बार नीचा दिखा रहे हैं, बार बार आपको कि no, you should dance, you're so boring and all, then politely told them that it's okay, there will be some other day जब डांस नहीं नेसेसरी होगा तो हम तब पार्टी कर लेंगे, तब मैं आपके साथ उठ बैठ लूंगी, अभी आप इंजॉय करो. आई गेस दिट्स नॉट माई डे. इसमें आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे. यू आर जस्ट टेलिंग देम दैट दिस इज माई बाउंड्री, आई कैन नॉट क्रॉस दैट. एंड इवन विद द पीपल you like the most, even with the people you trust the most, your boundaries should be there. That is very important. That is the thing. Like people don't attract the person, the situation which are just after them, which are always there for them. So you need, if you want to be a strong person, if you want to build a framework for you, if you want to build that life for you where everybody should be like respect you the way you want to respect you want them to respect you, and you want to respect them, and in this you want same in return, that you have to build a life for yourself, a framework, a personality that should be respected in that way. And उसके लिए आपको भी really कुछ करना पड़ेगा. And if you want that, just set your boundaries. For example, आप नहीं ब्लेम कर सकते लोगों को कि फलां ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे बिट्रे किया, उसके साथ मैंने इतना अच्छा किया, उसने मेरी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया, उसके साथ मैं इतना नाइस था लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहा, उसको मैंने प्रायोरिटी बनाया लेकिन उसने किसी और को प्रायोरिटी बनाया एज़ कम्पेयर टू मी. आप लोगों से ये नहीं, बिकॉज दिस इज़ देयर नेचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक जानवर है विच इज़ हार्मफुल,
वो आपके घर में एंटर हो सकता है, और वो आपके घर में एंटर होता है और एंटर होके वो आपको हार्म कर सकता है, वो आपको हार्म करता है। आप उससे दैट इज हिज नेचर। आप उससे नहीं गिला कर सकते, आप उससे नहीं कह सकते कि फलां जानवर ने मुझे मेरे घर में घुस के हार्म किया। इट वॉज योर जॉब टू सेट द बाउंड्रीज। आपने कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करनी थी, आपने ऐसी प्रिकॉशंस करनी थी कि वो आपके उस प्राइवेट स्पेस में एंटर ही ना हो सकता। सो सेट योर बाउंड्रीज। इफ यू आर समवन हु स्ट्रगल विद योर बाउंड्रीज अलॉट, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर बाउंड्रीज। एंड द मेन थिंग इज, द प्रॉब्लम विद अस इज दैट कि जिन लोगों को हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ हम वाइब करते हैं, जिन लोगों से हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर देते हैं। इफ़ दैट रिलेशनशिप वर्थ इज, तो इट्स ओके, आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा बहुत पुश भी कर सकते हो। लाइक हम नहीं इतना अपनी ज़ात में वो खुद परस्त हो सकते कि नहीं, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन एंड यू नीड टू लव मी द वे। ऑफकोर्स हम में कुछ खामियां हैं, कुछ उनमें हैं, कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हमारी होंगी, कुछ अच्छी उनकी होंगी, कुछ अच्छी हमारी भी होंगी, कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स उनकी भी होंगी। तो वट इज़ द बैलेंस्ड वे कि you can push your boundaries a little bit where you feel like the relationship is worth it। वो आपके लिए इतना कुछ करें तो आप उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, but where you feel like you are over giving, you are not setting your boundaries, you are just doing good for them, and in reply you are not getting the same। So draw your boundaries right there, say no, no, you did not do that for me, I cannot। आपने ऐसा बिहेव किया था, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपनी बाउंड्रीज खुद डिफाइन करनी है। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि दिस इज़ माई बाउंड्री। जस्ट हैव द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ एंड स्टिक ऑन दैट। So I hope you understand that the to be a successful person, to be a desirable person, to be a person who should everybody should respect them, so you need to really set your boundaries. And if you're someone struggling with your boundaries, believe me, you have to really stick to it. This is the only way that people can uh, be attracted towards your personality, and can make respect you, can trust you, and can make you a priority। So I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।